हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हुए? आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल टिकल द माइंड। आज का दिन हमारे परिवार के लिए एक बहुत ही खास दिन है। इतना दिन तक आप सिर्फ मेरे पास से सीख रहे थे, समझ रहे थे और मेरे को ढेर सारा प्यार दे रहे थे, लेकिन आज से हमारे साथ जुड़ रहे हैं और एक खास पर्सन जो आप लोगों को बायोलॉजी केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एकदम क्रिस्टल क्लियर कॉन्सेप्ट के साथ समझाने वाले हैं। बायोलॉजी केमिस्ट्री के जो क्वेश्चंस आते हैं, जो डिफिकल्टीज आते हैं, उसको सॉल्व करने के लिए आपके साथ जुड़ रहे हैं एक नए खास पर्सन। आइए स्वागत करते हैं हमारे दोस्त, हमारे चहीदे पर्सन सैकत सर का। सैकत सर, आप सबका आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। हमारे दोस्त लोग जो है चैनल के साथ जुड़े हुए, वो आपके पास से सीखेंगे कैसे केमिस्ट्री और बायोलॉजी के कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं। थैंक यू कुंतल सर फॉर योर वार्म वेलकम। हेलो स्टूडेंट्स, मैं सैकत बैनर्जी। आज से मैं आपको इस चैनल टिकल द माइंड में केमिस्ट्री और बायोलॉजी को सब्जेक्ट्स में पढ़ाना चाहूंगा। मेरा ये मानना है कि पढ़ाई सिर्फ रटने का चीज नहीं है, पढ़ाई एक फील करने का चीज है। अगर कुछ कॉन्सेप्ट्स को क्लियर नहीं है, कुछ कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने का चीज है, तो मैं आप सभी को इस केमिस्ट्री और बायोलॉजी में जितना सारा डिफिकल्टीज है, जितना सारा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, जितना सारा हार्ड चैप्टर्स है, उसको और भी इजी तरीके से और भी मजेदार तरीके से आप लोगों को समझाऊंगा। आप लोगों को जितना भी क्वेरीज है, मैं आप लोगों का क्वेरीज क्लियर करूंगा। आप लोगों को जितना भी सारा जगह पर इनसॉल्विंग प्रॉब्लम सॉल्विंग है, मैं उस अनसॉल्व प्रॉब्लम्स को सॉल्व करूंगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज से हमारा पहला टॉपिक। लेट्स स्टार्ट। Good evening, my dear friends. Welcome to our new session in Tickle the Mind, that is biology section. Myself, Saikat Sir. Today, I am going to teach you about a very important chapter in biology, that is about the circulatory system. Hope the exams is coming near. ICSE, CBSE, all board exams are very near to you. And now the festive mood, Christmas mood, New Year mood. So by this, but we have to study. We have to study hard all these chapters. So let us study about the circulatory system, one of the very important chapter on this biology. Okay. Now, before going to directly to enter this chapter, let us study about what is this system means. In human body, we have found a lot of systems are there: digestive system, expiratory system, endocrine system, respiratory system, nervous system. So many systems are there in human body. But we'll stick on today one thing, that is your circulatory system. So let's at first know what does the word system means. System means what? System means organs, group of organs. So what does circulatory system is made up of? This circulatory system is made up of three things. That is your heart. Remember, number one, heart. Number two is your blood. And number three is your blood vessels. So these three things made up your circulatory system. So now let us know about circulation. What is circulation? Circulation means what? Circulation means the process by which different kinds of nutrients, oxygen, carbon dioxide, all this they are transported to different parts of our body. But today we are going to know about, let us study about your heart. Very important organ. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गन, समझ लो, बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है बॉडी के लिए। जब when you are sleeping, this organ already what? They continuous to pump the blood. So what is the main function of the heart? It is a pumping organ. So what is the main role of heart? Pumping organ. Now what does it pump? One thing, it pumps your blood. The heart pumps blood. So what is heart made up of? Remember, heart is made up of your cardiac muscles. So heart is made up of what kind of muscles? It is made up of your cardiac muscles. Now, let us know where this heart is located. A very important question comes. Where this heart is located in human body? Heart is located in the thoracic cavity. Heart is located in the thoracic cavity, slightly left near to the lungs. And that particular region, what it is known as? That particular region is known as mediastinum. Remember this term, mediastinum. So the region where heart is located, that particular region is known as mediastinum. Repeating, heart is located in the thoracic cavity between the lungs. Particular region is known as your mediastinum.
Heart is made up of what kind of muscles? Cardiac muscles, the type of muscles which continuously pumping the blood to all the different organs. Now, what is the size of the heart? It depends on the male and female. Size of the heart depends on the male and the female, that is weight. But if you think what is this size? Ek muthi ke saman. That means if you do this type of muthi, that means the size of the heart is just like fist. Size of heart is size of fist. That means muट्ठी का समान एक heart का size होता है. So before going to directly to about the structure or anatomy of the heart, let us study how heart is protected. Now heart is protected by a layer. That particular layer is called your pericardium. Remember this, all the students, very very important, the term is pericardium. The heart is protected by pericardium. Now this pericardium, that means, and what are the layers of heart? Let us study about the layers of heart. What are the layers of heart you get? See, the layers of your heart is what? Number one is your endocardium. I hope you are all getting my point. Number two is your myocardium. And number three is your epicardium. Once more I am repeating that the heart is made up of your three layers. That is your endocardium, myocardium and your epicardium. Now let us back this layer. Endo, the term itself says endo, means what? Means your inner layer. Myo means what? It is your middle layer. And epicardium, it is your what? Epicardium means it is your outer protective layer. Outer protective layer. So if any kind of questions comes in your exam time, in your board exam, a very definite question, name the three layers of the heart. The three layers of the heart are endocardium, myocardium and your epicardium. So see how many already we have discussed a few questions regarding your type of exam. In exam times, you know, what are the questions? So heart is, if one type question comes, your MCQ type questions, the layer of the heart, three layer, endo, inner, myo, middle, epicardium, outer protective layer. Okay. And what are the muscles? Which is your cardiac muscles. I told you already, where heart is located, that particular region, it is known as your mediastinum. Size of heart, just like the size of your fist. Now let us entry to directly to the anatomy of the heart. See, already I have drawn heart not straight. I have drawn an oblique pattern. Why? Because just now I told you, in order to accommodate the lungs, heart is slightly obliquely placed in between the thoracic region. Where? In between the thoracic region. Now let us study how the blood is pumped to different organs. Now if we know this, what are what I have drawn? Let us tell a gist about it. Now heart is made up of at first 4 chambers. How many chambers are there? 4 chambers. जैसे होता है ना 4 रूम, तो पकड़ लो ये 4 रूम, हार्ट बनाया गया है 4 रूम में. ये 4 रूम के बीच बीच में देखो 1 2 3 4 मैंने कुछ ड्रॉ करके रखा है. What are they? They are nothing. We'll go on discussing about it. Let us find this. Now, right, that is, what are the 4 chambers? See, RA means right auricle, RV means right ventricle, LA means left auricle, LV means what? Left ventricle. So right auricle, right ventricle, left auricle, left ventricle. So auricles, let us know about your auricles. So auricles means what? Auricles means they, one word we can say, they are known as your receiving chamber. So auricles are your receiving chambers. They receive blood. Ventricles, what are ventricles? We say ventricles are your what? They are your distributing chamber. Ventricles are distributing chambers. I hope you know auricles, receiving chambers, ventricles, distributing chambers. Now let us see how the blood circulated by heart. See, from all over the body, 2 veins. We'll know, I told you blood vessels. Let us see what are blood vessels. Very gist I'm telling you. Next video we'll tell about blood and blood vessels. So blood vessels, 3 kind. That is your arteries, that is your veins, and that is your capillaries. So these are the 3 kind of blood vessels. Later sections we'll discuss about this blood and blood vessels. Not in this section, because otherwise you'll get puzzled up. You'll get messed up with all these things. Okay. So let us know about this.
circulation at first. Okay, my dear students. See, circulation means what? All the deoxygenated blood, mind it, what I'm going to say, deoxygenated blood, it is carried by two kind of veins. That is, one is called your superior vena cava. Remember this, superior vena cava. Another one is your inferior vena cava. So this superior and inferior vena cava, they both bring deoxygenated blood to your right auricles, to your right auricle. Superior vena cava from your upper section, upper portion, upper ऊपर का हिस्सा से deoxygenated blood. Inferior vena cava lower section, नीचे का हिस्सा से, नीचे. That means they both bring deoxygenated blood to your what? Right auricles. From this right auricles, the blood goes to where? The blood goes to your right ventricles. From this right ventricles, the blood goes to where? The blood goes to one of another important organ, that is called your lungs. For what purpose the blood goes? The blood goes into lungs for getting oxygenated. For getting oxygenated. From lungs, again it comes to left auricle. Again from left auricle to left ventricle. And then the blood goes to your body. Now, the thing is very easy. I am telling the thing is very easy. सारा बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट ऑरिकल में आ रहा है, राइट ऑरिकल से राइट वेंट्रिकल जा रहा है, फिर दोबारा जा रहा है लंग्स में, लंग्स से फिर ऑक्सीजनेटेड होने के बाद कौन सा ब्लड आ रहा है? रिमेंबर, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है लेफ्ट ऑरिकल में, और ऑक्सीजनेटेड ब्लड फिर लेफ्ट वेंट्रिकल, उसके बाद बॉडी में चला जा रहा है. दैट मींस इट इज गोइंग टू ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी. सो सी डिफरेंस, देखो डिफरेंस समझ लो. राइट साइड डील्स अप व्हाट काइंड ऑफ ब्लड? पूरा राइट साइड डील कर रहा है तुम्हारा हार्ट में deoxygenated blood. Right side dealing. Your left side dealing with your oxygenated blood. Left side of your heart deals with your oxygenated blood. Now, a certain very common question arises कि इधर का तो deoxygenated blood है और इधर का तो oxygenated blood है, तो blood mixed up नहीं हो जाता? No, never. Question is why the blood does not get mixed up? क्यों ऐसा हो रहा है? देखो बीच में एक तो दीवार खड़ा है ना. मैंने जब एक रूम से दूसरे रूम तक जाने के लिए कोशिश करा, मेरा तो हर घर में दीवार है, खिड़की तो है इधर, पर देखो इधर कोई खिड़की नहीं है. नो डोर इज देयर, नो विंडो इज देयर. तो हाउ कैन आई मूव फ्रॉम वन रूम टू अनदर? मूव करना है तो एक ही हिस्से में जाओ ने बाबा. तो दैट मींस द ब्लड आल्सो, दैट मींस रिमेंबर वन थिंग, द फ्लो ऑफ ब्लड इज ऑलवेज यूनिडायरेक्शनल. ब्लड ऑलवेज फ्लो यूनिडायरेक्शनल. फिर और एक क्वेश्चन देखो, यूनिडायरेक्शनल तो बोल दिया, सोच सकते हो मैंने तो बोल दिया यूनिडायरेक्शनल, पर लेकिन अगर किसी मामले में पकड़ लो कभी भी ये ब्लड अगर दोबारा बैक चला गया तो क्या होगा? बाद में डिस्कस भी करेंगे, वो भी डिस्कस करेंगे बाद में. तो पहले ये समझ लो, तो ब्लड ऐसे ऐसे जा रहा है. नाउ लेट अस देखो, मैंने कुछ इधर के ड्रॉ करके रखा. ये सब क्या है? व्हाट आर ऑल दिस फोर थिंग्स? दे आर कॉल्ड योर वल्व्स. दे आर कॉल्ड योर वल्व्स ऑफ द हार्ट. ओके, एक टर्म एक सोच लो दिमाग में, अभी जान चुके हो, हम लोग बार बार बोलते हैं हार्ट ब्लॉकेज हो गया. We say this word, heart blockage. We use the term stroke. The person died due to stroke. उसका अचानक से दौड़ते दौड़ते डेथ हो गया, जीन करते करते डेथ हो गया. तो क्यों ऐसा हो रहा है? What happened? What is this happened? Now see this, इसलिए ना ये चारों वर्ब्स है. कुछ टाइम में क्या होता है, बॉडी का प्रेशर बहुत बढ़ जाता है. प्रेशर मतलब what? ब्लड प्रेशर. प्रेशर क्या होता है? प्रेशर मतलब ब्लड प्रेशर. क्यों बढ़ जाता है? डिस्कस करेंगे, वो भी डिस्कस करेंगे. तो पहले थोड़ा टीच करने दो वल्व्स के बारे में. दैट मींस व्हाट आर वल्व्स? वल्व्स आर फ्लैप्स. वल्व्स आर फ्लैप्स. फ्लैप्स क्या होता है? तो एक समझ लो, व्हाट आर वल्व्स? ना वल्व्स आर जस्ट लाइक फ्लैप्स. ओपन, जस्ट ओपन, इधर उधर बंद करना. तो देयर आर फोर वल्व्स इन अ हार्ट. हाउ मेनी काइंड्स ऑफ वल्व्स आर देयर? फोर वल्व्स. एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं डिस्कस कर दिया. तो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ वल्व्स आर देयर इन ह्यूमन बॉडी? फोर टाइप्स ऑफ वल्व. आप नेम देम एंड लोकेशन. अब देखो, ये इसका नाम क्या है? इट इज कॉल्ड योर ट्राइकस्पिड वल्व. इसका नाम है ट्राइकस्पिड वल्व. इसका नाम क्या है? इसका नाम है बाइकस्पिड वल्व. मैं बोल रहा हूं बाइकस्पिड. दूसरा नाम भी है मिट्रल वल्व. इट इज ऑल्सो नोन एज योर मिट्रल वल्व. व्हाट इज द नेम ऑफ दिस वल्व? इट इज कॉल्ड योर पल्मोनरी सेमिलुनर वल्व. इट इज कॉल्ड पल्मोनरी
semilunar valve. And what is this valve called? It is called your aortic semilunar valve. Now, see one thing. So, four valve: tricuspid, bicuspid, pulmonary semilunar, aortic semilunar. Now, location, very important. Just now I am repeatedly telling you, prepare this question. That is, name the four valves with their location. Those who are going to approach for ICSE examination, this is a very important question. Another important question is, what is the other name of bicuspid valve? That is called your mitral valve. Now, tricuspid, bicuspid, pulmonary semilunar, aortic semilunar. So, very easy. If you remember like this, tricuspid between right auricle, right ventricle, bicuspid, left auricle, left ventricle, pulmonary semilunar valve at the junction of your right ventricle, and don't write at the junction of right ventricle and leave your answer sheet like this. No, at the junction of right ventricle and pulmonary artery. Now, this blood, I told you, deoxygenated blood is carried by your pulmonary artery. It is carried by pulmonary artery. So, at the junction of this, that means your this pulmonary artery and right ventricle, pulmonary semilunar valve is located. And at the junction of right ventricle and who carries the blood towards the body? Aorta. It is the largest artery. Remember, it is the largest artery, aorta. That means it is located your aortic semilunar valves. So these four valves control the flow of the blood. So this pulmonary artery carrying the deoxygenated blood to your lungs. Who is bringing the oxygenated blood to lungs? It is your pulmonary vein. Now, when I will teach artery and vein, I will tell you, but there is an exception is there. Basically remember, artery always used to carry oxygenated blood. Arteries always. सब हर टाइम में arteries oxygenated blood ही carry करके लेके जाता है. But veins हर समय deoxygenated blood ही carry करके लेके जाता है. But exception है. Exception कहाँ पर है? ये दो. Exception ये दो है. Pulmonary artery इस समय deoxygenated blood taking to lungs, or pulmonary vein this time taking what? From your this. So I hope these things is now quite clear to everyone. Now see, dear students, just look this. What mode you are seeing? Two mode, isn't it? Two mode. That means this side one, this side one. So as you are noticing two mode of circulation, therefore remember, in our human body, this type of circulation is known as what? It is known as your double circulation. In human body, the circulation type is called your double circulation. अगर double circulation को हम लोग divide कर दे, this side, that is taking the blood from right ventricle to lungs to getting oxygenated, is known as what? It is called your what? This time is known as what? It is known as your pulmonary circulation. So what is pulmonary circulation? What is pulmonary circulation means? Pulmonary circulation means the circulation that involves, that is carrying the deoxygenated blood to your lungs. That called about your pulmonary circulation. And what is systemic circulation means? Systemic circulation means what? Carrying the oxygenated blood to all the parts of the body. I hope I can make you understand that what are the two types of circulation, that is pulmonary circulation, another one is your systemic circulation. Now let us very brief, let me tell you. Now you can also think that how are these valves are held in their position. Now these valves actually they are held in a positions by a tuft of like this kind of tissue, by a tuft of this kind of tissue that helps the valves in their positions. That means they are attached to the papillary muscles. What kind of muscles I told you? Papillary muscles. And this tough kind of tissue by which the valves are held in a position that are called your what? That is called your cordia tendini. Cordia tendini. Be very, very careful about this spelling. Cordia tendini. Okay. So what is cordia tendini? Now cordia tendini means it is a tuft of the tissue which is attached to what kind of muscles? Don't make a mistake. It is not attached to cardiac muscles. It is attached to your papillary muscles. It is attached to your papillary muscles, and that is called your cordia tendini. So before ending this circulation portions and before ending about this heart, let us give a very brief study about what we have
taught today, because in exam time you can get a short questions about a schematic diagram. Not this diagram you will get schematic diagram type of questions you can get in exam time. So especially the ICSE students, they can get schematic diagram questions. For them, you know the pathway. First of all, you see the two diagrams are given in a book. Follow those two diagrams. And what the things that you will memorize, what are the things I told you? See, the chapter is very vast. Don't get very much thinking that the chapter is very vast, and don't leave this chapter also. Study. CBSE students, in life processes, this chapter is there, but in very brief are there, but in ICSE it is a very vast chapter. So what are the points that you need to memorize? What are the points? Just now I told you, point number 1, that I told you, the layers of the heart. Memorize this very carefully. Second point, what are the second point that you will memorize? You will memorize about the names of the valves with their location. Okay, memorize it very carefully. Third point, you will read about the double circulation. That is, what are pulmonary circulation and systemic circulation. Fourth point, what you will know? Other name of bicuspid valve. It is a mitral valve. Fifth point, you will read about your what are cordia tendineae. So if in a brief you will read this, another questions you will read about, name the veins that carry deoxygenated blood to heart. What are the name the veins? Superior vena cava, inferior vena cava. That are the veins that carry the deoxygenated blood to heart. Which carry the oxygenated blood away from the heart? It is your aorta. Aorta carry oxygenated blood away from the heart. So these are the portions. You just go through it. Just have a glance, take out your book, go through it, read those points very importantly. In our next video or the next class, we will discuss about these two things. That is about your blood and regarding your blood vessels. Just I told you, we have discussed arteries and veins, but little bit about the structure of arteries and veins you need to know. So we'll go on telling about these arteries, veins, capillaries, about this. Till then, have a good day to everyone. Read this. Any problem, anything, you can ask me or you can comment me in your comment box sections. Till then, have a good day to each and everyone. Hopefully, we'll meet in the next video. थैंक यू। तो आज हम लोग सर्कुलेटरी सिस्टम, पहला हिस्सा सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में, हम लोग हार्ट के बारे में जानकारी दे चुके हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे ब्लड एंड इट्स कंपोनेंट। द सेकंड पार्ट ऑफ दिस थिंग इज ब्लड एंड इट्स कंपोनेंट्स। सर्कुलेटरी सिस्टम का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ब्लड। सो वी नो इन ऑल द काइंड्स ऑफ वर्टिब्रेट्स ब्लड इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट। सो व्हाट इज ब्लड? Now blood, at first we have to know, पहले जानकारी लेना चाहिए blood क्या चीज है। Now blood is a fluid connective tissue derived from embryonic mesoderm. So where blood is derived from? Now blood is derived from your embryonic mesoderm. Remember this. Where blood is derived from? Now blood is derived from your embryonic mesoderm. Now what is the pH of blood? Now pH of blood is 7.4. That is slightly alkaline in nature. Blood का pH कितना है? Now blood का pH है 7.4. That means it is slightly alkaline in nature. What is the total volume of blood presence? कितना पूरा volume blood presence है? The total volume of blood is 5.6 liter. टोटल वॉल्यूम ऑफ ब्लड प्रेजेंस है एक ह्यूमन बॉडी में 5.6 लीटर। नाउ दिस ब्लड इज डिवाइडेड अप इनटू टू कंपोनेंट्स। ये ब्लड को हम लोग दो कंपोनेंट में डिवाइड किया है। वन इज योर प्लाज्मा और दूसरा है ब्लड सेल्स। हम लोग ये डिस्कस करेंगे ये सब चीज क्या है। सो पहला चीज क्या है ना, पहला है प्लाज्मा। सो व्हाट इज प्लाज्मा? प्लाज्मा क्या है ना? प्लाज्मा इज अ स्ट्रॉ कलर, दैट इज येलो कलर्ड फ्लूइड। प्लाज्मा इज अ स्ट्रॉ येलो कलर्ड फ्लूइड। What does plasma consists of? Plasma क्या क्या चीज है प्लाज्मा में? Now plasma consists of water 91% and solutes that of your 9%. प्लाज्मा कंसिस्ट करता है वाटर 91% एंड सॉल्यूट्स करता है 9%। ये सॉल्यूट 9% में इसमें है इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स दैट कंसिस्ट ऑफ योर 1%। इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स कंसिस्ट ऑफ 1% एंड ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ योर 8%। ये इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स क्या क्या चीज है ना? इसमें है सोडियम, इसमें कैल्शियम, क्लोरीन, बाइकार्बोनेट, potassium, magnesium, copper, phosphate and iron. So all these inorganic molecule consists of in the solute. And organic molecules में है plasma proteins. What is plasma proteins? उसमें क्या बोला जाता है plasma protein? Globulin. One of the very important proteins is a globulin. Another important plasma protein is your histamine. So all this histamine, then your fibrinogen. So all these are the some of the important plasma protein that the plasma consists of.
फिर से मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, तो प्लाज्मा क्या है ना? प्लाज्मा इज अ स्ट्रॉ कलर्ड, येलो कलर्ड फ्लूइड कंसिस्टिंग ऑफ वाटर 91% एंड दैट ऑफ सॉल्यूट ऑफ योर 9%. इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स क्या कितना है? 1%. ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स कितना है? 8%. हम लोगों को रिमेंबर करना चाहिए, याद करना चाहिए क्या क्या प्लाज्मा प्रोटीन्स है? ग्लोब्यूलिन है, हिस्टामाइन है, फाइब्रिनोजन है. तो ये मिलकर हो गया है तुम्हारा एक प्लाज्मा का पार्ट. अब हम लोग आएंगे ब्लड सेल्स के बारे में ना. ब्लड सेल्स कितना है? टोटल ब्लड सेल्स कितना परसेंटेज है? 45%. इसमें है आरबीसी. आरबीसी फुल फॉर्म मींस रेड ब्लड सेल, और इसका बायोलॉजिकल टर्म क्या है? आरबीसी का बायोलॉजिकल टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है. इट इज कॉल्ड योर एरिथ्रोसाइट्स. So RBC, that is red blood cells, which biological term is your erythrocytes, consists of 99%. So blood cells में सबसे ज्यादा होता है RBC. क्यों? RBC का शेप क्या है? It is biconvex in shape. RBC का शेप है biconvex. याद रखना, RBC का शेप है biconvex. And why it is red blood cell? Because there is a presence of a globular protein. एक globular protein presence है जिसको हम लोग बोलते हैं hemoglobin. So hemoglobin is a globular protein that is iron containing pigment, और आयरन कंटेनिंग पिगमेंट भी बोला जा सकता है. सो हेमोग्लोबिन क्या चीज है ना? हेमोग्लोबिन एक ग्लोब्यूलर प्रोटीन जिसके माध्यम ये आरबीसी, दैट मींस इट इज योर रेड, इट इज रेड इन कलर. इन सम काइंड्स ऑफ योर एनिलीड्स, इफ यू गो फॉर सम काइंड्स ऑफ एनिलीड्स, ब्लड इज नॉट रेड इन कलर. इट कंटेन्स ए कॉपर कंटेनिंग पिगमेंट. दैट इज व्हाई इन सम काइंड्स ऑफ एनिलीड्स ब्लड इज ब्लू इन कलर. ब्लड पूरा ब्लू कलर होता है. उसको उस टाइम पे उस ब्लड को क्या बोला जाता है? इट इज कॉल्ड योर हेमोसाइनिन. So in some kind of annelids, the blood is blue in color. Why? Because due to the presence of copper containing pigments. That is why blood is blue in color. But in other all mammals or anywhere if you see, जहां पर भी देखे blood होता है red color due to the presence of a globular protein called your hemoglobin. दूसरा पार्ट है WBC. इसका बायोलॉजिकल टर्म क्या है? इसका बायोलॉजिकल टर्म है ल्यूकोसाइट्स. इसका बायोलॉजिकल टर्म है ल्यूकोसाइट्स. नाउ दिस WBC मतलब क्या? व्हाइट ब्लड सेल्स. और इसका परसेंटेज कितना है? इसका परसेंटेज है 0.1%. बहुत कम है, बट लेकिन WBC बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है. नाउ WBC दो तरीके के डिवाइड किया जा सकता है. WBC is divided into two types. One is your granulocytes, another is your agranulocytes. How we divide this? According to the presence of granules in the cytoplasm. Cytoplasm में कितना granules है उसके हिसाब से granulocytes, agranulocytes. That is presence of granules, that is called granulocytes, and absence of granules, that is called your agranulocytes. Now this granulocyte divided up into neutrophil. Neutrophil means how many percentage present? 62%. So by seeing the percentage only you can guess that how many types, it is much more. Neutrophil, eosinophil and basophil. These are the three types of your granulocytes. What are the two types of agranulocytes? It is your monocytes and your lymphocytes. Now this monocytes is one of the largest among the WBC. Remember this, monocytes is one of the largest among WBC. That is, what is the role of this neutrophil and monocytes? This neutrophil and monocytes, they together दोनों एक साथ can squeeze through the blood capillary walls. वो दोनों क्या कर सकता है? स्क्वीज कर सकता है, अंदर घुस सकता है इन द ब्लड कैपिलरी वॉल्स. सो दिस स्क्वीजिंग ऑफ द मोनोसाइट्स एंड न्यूट्रोफिल इनटू द ब्लड कैपिलरीज, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड इज व्हाट? दैट प्रोसेस इज कॉल्ड योर डायापेडेसिस. रिमेंबर दिस टर्म बहुत आता है आईसीएसई एग्जाम में और सीबीएसई में. तो व्हाट इज डायापेडेसिस? Squeezing through the walls of the blood capillaries by neutrophil and the monocytes is called your diapedesis. Now I have talked about lymphocytes. Lymphocytes, it is divided into two categories. One is your B lymphocyte, another one is your T lymphocytes. But it is higher class में B lymphocyte और T lymphocyte क्या है उस चीज के लिए बोला जा सकता है. Now last part is your platelets. Platelets क्या है? Platelets का biological term क्या है ना? Platelets का biological term है thrombocytes.
Platelets का biological term है thrombocytes. Now that is consist of 1%. Now after telling all these component, let us discuss about the function. चलो function के बारे में थोड़ा जानकारी ले लेते हैं. RBC पहले हम लोग बोल चुका है RBC के बारे में. Let us talk about RBC. What is the function of RBC? Now RBC बोल चुका है RBC contains hemoglobin. So if RBC containing hemoglobin, that means RBC is mostly responsible for transport of oxygen. Oxygen क्या करता है? हेमोग्लोबिन के साथ कंबाइन हो जा सकता है और फॉर्म करता है ऑक्सी हेमोग्लोबिन. सो ट्रांसपोर्ट, excretory, throwing out the excretory products, everything is done by this RBC. What is the role of WBC? WBC का रोल क्या है? अभी मैंने बताया. WBC का रोल क्या है? प्रोटेक्शन. That is to provide the body immune against any kind of disease. बॉडी को प्रोटेक्ट कर रहा है. कोई भी बाहर से कोई बैक्टीरिया, कोई फंगी, अगर कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बॉडी में एंटर कर रहा है तो ये WBC क्या कर रहा है? प्रोटेक्शन कर रहा है. कौन प्रोटेक्ट कर रहा है? बोला ना अभी जैसे न्यूट्रोफिल, मोनोसाइट, दिस टू इमीडिएटली दे रिकॉग्नाइज द type of the microorganisms that are entering and they immediately destroy that kind of microorganisms. So WBC main role is to protect the body against any kind of foreign substances. And last part is your platelets, that is thrombocytes. कभी कभी हम लोग देखते हैं कि कभी कई जगह कट जाता है. There is a cut in our body and the blood starts to coming out. So blood खून निकलता है उस टाइप से. So जब खून निकलना चालू करता है कुछ समय में खून निकलते ऑटोमेटिकली इट स्टॉप्स, बंद हो जाता है. हाउ इट स्टॉप्स? क्यों स्टॉप हो जाता है? बिकॉज हमारे बॉडी में क्या है? प्लेटलेट्स से. सो व्हाट इज द रोल ऑफ प्लेटलेट्स? द रोल ऑफ प्लेटलेट्स इज योर क्लॉटिंग. द प्लेटलेट्स क्या रोल प्ले करता है? द प्लेटलेट्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. प्लेटलेट्स रोल प्ले करता है क्लॉटिंग. इट हेल्प्स टू clot the blood. So as a whole, if you look at the thing, that is RBC, transport, WBC, protection and platelets by clotting. Clotting कैसे clotting करता है? ना clotting करता है अगर कुछ जगह पर कट हो गया है, वुंड हो गया है, कट हो गया है, तो उस टाइम पे क्या होता है? एक प्रोटीन रिलीज करता है. अभी मैंने बोला प्लाज्मा प्रोटीन है, फाइब्रिनोजेन है. सो फाइब्रिनोजेन, प्रोथ्रोम्बिन, ये सब क्या होता है? ये ब्लड को क्या कर लेता है? ये ब्लड को क्लॉट कर लेता है, मेश फॉर्म कर लेता है. उस जगह पर एक मेश फॉर्म हो जाता है. तो जब मेश फॉर्म हो जाता है ऑटोमेटिकली ब्लड गेट्स क्लॉट. सो इस पार्ट से कौन सा चीज हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे एग्जाम के पर्पस के लिए. फर्स्ट ऑफ ऑल रीड व्हाट इज द पीएच ऑफ ब्लड. पहले पढ़ लो पीएच ऑफ ब्लड कितना है. याद रखना पीएच ऑफ ब्लड इज 7.4. that is blood is slightly alkaline. If you test a blood sample you can also able to know the blood is slightly salty. So pH of blood is 7.4. First question, that is what is pH of blood? Short type MCQ, any type of questions can come. That is 7.4. Second question, what is plasma? Plasma क्या है ना? Plasma is a straw colored, yellow colored fluid present in your blood. Second question you learn. Third question, what are the types of WBC? WBC का types कितना है? Now one is your granulocytes and another is your agranulocytes. What are the type of granulocytes? अच्छे से याद करके पढ़ना. न्यूट्रोफिल, यूसोनोफिल, बेसोफिल. और याद रखना ये परसेंटेज भी 62%, 2.3%, 0.4%. और एग्रानुलोसाइट, मोनोसाइट, लिम्फोसाइट्स. बीटी अभी नहीं, बीटी हायर क्लास में पढ़ोगे, बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट्स के बारे में. नाउ आरबीसी, व्हाट इज द शेप ऑफ आरबीसी? अभी बीबोला बाइकॉन्वेक्स. और अच्छे से याद करो, वेरी माइन्यूटली रीड अबाउट द बायोलॉजिकल टर्म. आरबीसी बायोलॉजिकल टर्म एरिथ्रोसाइट, डब्ल्यूबीसी ल्यूकोसाइट, प्लेटलेट्स, थ्रोम्बोसाइट्स. और नेक्स्ट क्या पढ़ोगे? नेक्स्ट पढ़ोगे द स्टेप्स, हाउ द क्लॉटिंग फॉर्म्स. How the clotting forms, that is the steps of the clotting. This thing you memorize from this part. Another thing memorize, what is diapedesis? Diapedesis क्या है? Diapedesis means squeezing to the blood capillaries. That is when neutrophil and monocyte they squeeze to the blood capillaries. That squeezing to the blood capillaries, it is called your what? It is called your diapedesis. And another term is there. Remember that term. That is called your phagocytosis. Phagocytosis, all these technical biological terms. Remember what is phagocytosis? Destroying the bacteria or any kind of microorganisms. So microorganisms को destroy करना, that process is called what? That process is called your phagocytosis. उस process को हम लोग बोलते हैं phagocytosis. So these are the things that you memorize this very carefully. Another thing you can memorize, hemocyanin. What is hemocyanin? Hemocyanin क्या है?
Hemocyanin, just now I told, in some kind of annelids, blood is blue in color. Why blue in color? Because due to the presence of a copper containing pigment. So that is why blood is blue in color. That's why the term is called your hemocyanin. So read this portion. अगर अच्छा लगे हुआ तो I hope you have understood the topic about the blood and its components and the important questions from this part. Memorize this well so that you can get and score good marks in your exam. हेलो दोस्तों, अब हम लोग जाएंगे थर्ड हिस्सा के चैप्टर में, दैट इज ए ब्लड ट्रांसफ्यूजन. नाउ व्हाट इज ब्लड ट्रांसफ्यूजन? ब्लड ट्रांसफ्यूजन क्या होता है? ब्लड ट्रांसफ्यूजन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. अगर लाइफ में ब्लड किसी का कोई एक्सीडेंट हो गया, अगर एबीओ इनकम्पैटिबिलिटी है, किसी को ल्यूकेमिया है, किसी को एनीमिया है, तब ब्लड देने के लिए जरूरत पड़ता है. सो हम लोग ढूंढते जाते, कहां पर जाते? ब्लड बैंक पे जाते हैं, जहां पर ब्लड स्टोर करके रखा जाता है. हम लोग ब्लड डोनेट करते हैं. तो व्हाट इज दिस ब्लड ट्रांसफ्यूजन? ये हम लोग जानेंगे ये ब्लड ट्रांसफ्यूजन क्या है. ब्लड ट्रांसफ्यूजन इज अ प्रोसेस बाय विच a person, a healthy person, donate bloods to a unhealthy person, donates blood to a person who requires the blood. Now सारा पर्सन, सब लोग क्या ब्लड डोनेट कर सकता है? सब लोग सब के लिए ब्लड दे सकता है? तो हम लोग जानेंगे तो ब्लड ग्रुपिंग के बारे में. कितना सारा ग्रुप है ब्लड ग्रुप? देयर आर 4 ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप ओ एंड ब्लड ग्रुप ए बी. देयर आर 4 काइंड ऑफ ब्लड ग्रुप, ए, बी, ओ एंड ए बी. ये 4 ब्लड ग्रुप किया गया है किस हिसाब से? हाउ डू वी डिवाइड दिस 4 ब्लड ग्रुप? ऑन द बेसिस ऑफ योर एंटीजन एंड एंटीबॉडी. नाउ ये एंटीजन और एंटीबॉडी क्या है? नाउ एंटीजन है एक शुगर मार्कर, जो हम लोग का आरबीसी, मैंने सेकंड चैप्टर में ब्लड एंड कंपोनेंट में बोला आरबीसी. सो जो आरबीसी में प्रेजेंस है. और एंटीबॉडी क्या है ना? एंटीबॉडी है एक सिक्योरिटी गार्ड के तरह, ये प्लाज्मा में प्रेजेंट है. तो जब भी कोई, अगर हम लोगों का बॉडी में कोई फॉरेन सब्सटेंस घुस जाता है, इमीडिएटली दिस एंटीबॉडी टेल्स एंटीजन एंड द वर्क स्टार्ट्स. So on the basis of the presence of this antigen and antibody, we have divided the 4 blood group. देखो ब्लड ग्रुप A, इसमें कौन सा एंटीजन है? एंटीजन ए है, एंटीबॉडी बी है. ब्लड ग्रुप बी, कौन सा एंटीजन है? बी एंटीजन है, ए एंटीबॉडी. जस्ट ऑपोजिट, मेक ऑपोजिट. ब्लड ग्रुप ए बी, इसमें बोथ एंटीजन है. दैट मींस एंटीजन ए भी है, एंटीजन बी भी है, बट कोई एंटीबॉडी है नहीं. देयर इज नो एंटीबॉडी इज देयर. और ओ में कोई एंटीजन नहीं है, पर लेकिन एंटीबॉडी ए एंड बी दोनों ही प्रेजेंस है. तो इस एंटीजन एंड एंटीबॉडी के हिसाब से हम लोग ब्लड ग्रुप 4 को डिवाइड कर चुके हैं. नाउ क्वेश्चन अराइज, हु कैन गिव द ब्लड टू हुम? कौन किसको ब्लड दे सकता है? ओ जो ब्लड ग्रुप है, दे कैन गिव द ब्लड टू एनीवन. कोई भी, किसी को भी ब्लड ग्रुप दे, ए को भी दे सकता है, बी को भी दे सकता है, ए बी को भी दे सकता है. सो एज ओ कैन गिव द ब्लड टू एनीवन, सो इसीलिए इसको बोला जा सकता है यूनिवर्सल डोनर. इसको हम लोग बोलते हैं यूनिवर्सल डोनर. अच्छे से याद करके रखना, जब ब्लड ग्रुप ओ इज कॉल्ड योर यूनिवर्सल डोनर. क्यों हम लोग बोलते हैं यूनिवर्सल डोनर? क्योंकि ये सबको ब्लड दे सकता है. पर लेकिन एक क्वेश्चन इधर है, इट कैन रिसीव ब्लड ओनली फ्रॉम ओ. सिर्फ ओ से इसको ब्लड ले सकता है. दे सकता है सभी को, पर ले सकता है सिर्फ जिसका ब्लड ग्रुप ओ है, उससे ये ब्लड ले सकता है. ए बी, ये रिसीव कर सकता है ब्लड सभी से. इट कैन रिसीव ब्लड फ्रॉम एनी टाइप, बट कैन ओनली गिविंग ब्लड टू ए बी. सिर्फ ब्लड दे सकता है ए बी को, रिसीव कर सकता है किसी से. सो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड यूनिवर्सल रेसिपिएंट. इसलिए इसको हम बोलते हैं यूनिवर्सल रेसिपिएंट. सो याद रखना, यूनिवर्सल डोनर ओ और यूनिवर्सल रेसिपिएंट ए बी. नाउ इसके अलावा, ये एंटीजन एंटीबॉडी के अलावा और 4 ब्लड ग्रुप के अलावा और एक फैक्टर, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, उसको बोलते हैं RH फैक्टर. उसको बोलते हैं RH फैक्टर. ये RH फैक्टर क्या चीज है? RH फैक्टर क्या है? ये एक रेहेसस मंकी. ये रेहेसस मंकी से हम लोग को मिला है एक फैक्टर. रेहेसस मंकी से ये फैक्टर मिला है. तो होता है क्या ना, पॉजिटिव और नेगेटिव. पॉजिटिव और नेगेटिव ये हम लोग बोलते हैं ना. कैसे बोलते हैं? हम लोग बोलते हैं ना, ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, ए नेगेटिव, बी नेगेटिव. तो अगर किसी में अगर ये है, मींस है, RH फैक्टर है, तो दैट मींस इट इज पॉजिटिव. अब लोग हम लोग बोल रहे हैं ए पॉजिटिव, मींस इट कंटेनिंग द रेहेसस फैक्टर. अगर हम लोग बोल रहे हैं ए नेगेटिव, दैट मींस ये RH फैक्टर उसमें नहीं है. सो ये रेहेसस फैक्टर, RH फैक्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होता है जब
कोई भी किसी इंसान को अगर हम लोग ब्लड दे रहे हैं तो हम लोगों को दिमाग में रहना चाहिए कि किसको कौन सा ब्लड हम लोग दे रहे हैं। अगर इसमें मिसमैच हो गया, किसी भी तरह दूसरा ब्लड में चला गया, मिसमैच हो गया, दैट कुड कॉज अ डेथ ऑफ अ पर्सन, that could might cause a death of a person. So कोई भी इंसान को especially the woman during the time of pregnancy के टाइम में हम लोग के ब्लड बार बार चेक करते हैं। क्यों चेक करते हैं? ताकि उसका बेबी और मदर के बीच में जो फिटस एम्ब्रायो में जो कनेक्शन रहता है उसमें हम लोग चेक करता है ये ब्लड ग्रुप क्या क्या चीज होता है। सो दिस ब्लड ग्रुप और ब्लड ट्रांसफ्यूजन इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है इन ऑर्डर टू गेट दिस ABO इनकॉम्पैटिबिलिटी। अगर इसमें ये ना हो ताकि कोई ब्लड ग्रुप मिसमैच ना हो तो हम लोग ये ब्लड ग्रुपिंग को पहले देने से चेक करना चाहिए। तो इस चीज से हम लोग क्या पढ़ेंगे? व्हाट द थिंग्स दैट विल स्टडी फ्रॉम दिस पर्टिकुलर पोर्शन। बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है। यूनिवर्सल डोनर क्या है? O। यूनिवर्सल रेसिपिएंट क्या है? AB। O क्यों ब्लड ग्रुप O किसको बोलते हैं? ना इस पे कोई एंटीजन है नहीं और एंटीबॉडी AB है। AB में बोथ एंटीजन है, कोई एंटीबॉडी है नहीं। और एक चीज है दैट इज रेसस फैक्टर। और हम लोग पढ़ सकते हैं एंटीजन और एंटीबॉडी का जो रोल। ये जो एंटीजन और एंटीबॉडी दोनों हम लोगों का बॉडी में है, जो सिक्योरिटी गार्ड की तरह काम कर रहा है और हम लोगों को प्रोटेक्शन दे रहा है, जैसे WBC प्रोटेक्शन दे रहा है। एंटीजन एंटीबॉडी बहुत काम कर रहा है हम लोगों का बॉडी में। तो ये चीज अच्छे से पढ़ लेना इस चैप्टर से, तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन तुम लोगों का पूरा कंप्लीट हो जाएगा।